Kedarnath, the once bustling temple town high up in the Himalayas, now in ruins. Most buildings lie buried under several feet of sand and debris, others hanging on by a prayer. Thousands of its former inhabitants were either washed away by the Himalayan tsunami between the 16th and 17th of June or buried under tons of debris and boulders. The lucky ones who managed to survive now ordered to stay away for their own safety. Most of these buildings are incredibly unsafe. In fact, I'm standing just underneath a wall, which was a wall to a toilet of this guest house. You can see the geyser just hanging there. It's probably going to come down any moment. And you can see this wall's going to come down any moment. These buildings structurally very unsafe. And do remember, this is a seismically active zone. And that's why the authorities telling us that it's dangerous for people to come here. But clearly that doesn't really solve the dilemma of what do people who actually own homes, of establishments, of shops out here, what do they do in the meanwhile? How do they earn a living? How do they get on with their lives? 17 को फिर करीब 6:50 करीब हो रहे थे तो अचानक वहाँ से वो फिर फ्लैट आ गया। तो फ्लैट इतना ज़बरदस्त था कि सब कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, तो जैसे तैसे हम भी बच गए। Almost 3 months after the snow-covered mountains and glaciers above the shrine rained death and destruction on Kedarnath and the valley below. तो आपका यहाँ पर क्या घर है, दुकान है, क्या है? घर भी है, दुकान भी है। Ram Prakash Purohit and his neighbors, all Purohits at Kedarnath, have defied orders and returned to try and salvage what they left behind. Ram Prakash and his family used to live in this house for more than 20 years, selling groceries and religious items from the shop below to make a living. But that was before the flood. Prakash and his family were one of the lucky ones, managing to escape with little more than the clothes on their backs. 3 months on, he says that he may not have been so fortunate after all. आप कितने समय के बाद आ रहे हैं अपने घर पे वापस? मैं 3 महीने में आ रहा हूँ। जैसे ये 16-17 की तरह सदी हुई। ये घर है आपका? जी हाँ, अपने घर है और नीचे दुकान है। ये देखो, ये बक्सा थोड़ा ये देखिए सर, ये आगे से जो है कील निकाल करके इसका ये तोड़ रखा है। और ये है, आपने जो कुछ पैसे रखे थे आपने और नहीं निकाल पाए क्योंकि आप निकले होंगे जान बचा के। जी हाँ। कैसे गुजारा किया आपने? आपका परिवार भी होगा, कैसे गुजारा किया? सब ऐसे ही चल रहा है, धक्कों में चल रहा है, सब ऐसे ही। और किसी भी और अब भी आप अपने घर और दुकान के अंदर घुस भी नहीं पा सकते बिकॉज अभी भी रेत भरी हुई है, दरवाजे आपके टूटे और मेकल सुरक्षित भी नहीं अंदर जा। जो बक्सा है ये भी दबा था नीचे। अपने जो भी है रजिस्ट्रेशन है दुकान का, नंबर 1 काम धंधा है, फर्म चलती है यहाँ पे मैसर चिंदा प्रसाद राम प्रकाश पुरोहित के नाम से, और रिटर्न में भरता हूँ, सेल टैक्स में गवर्नमेंट को देता हूँ। अभी तक किसी भी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेरे दरवाजे पे अभी तक मेरे सामने कोई पूछने वाला ये भी नहीं आया। आपका क्या नुकसान हुआ, कितना माल था आपके अंदर? ये कौन है? ये हम सब भाई बहन यहाँ रहते हैं। It's a similar scene as we accompany the men from house to house. Everywhere there are signs of forced entry, broken almirahs and trunks, valuables taken out. Perhaps the only witness for a long time was this dog. In fact, for the first couple of days at least. I remember when I had come initially, I had actually seen both these dogs still out here, perhaps just silently bearing witness to what's really happening out here. Since the flood, most of these men have been living in the valley below, having taken shelter with friends and relatives. But 3 months on, money and generosity are both wearing thin. ये मेरा मकान है, आप देखिए। आपका मकान मेरे को सिर्फ यहाँ पत्थर ही दिख रहे हैं और सिर्फ यहाँ लकड़ी बलियाँ दिख रही हैं। प्रशासन ने कहा यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, हम डर के मारे भाग गए साहब। और जब भाग गए तो मेरा जो अपना सामान था व्यक्तिगत साहब, मेरा सामान यहाँ पे लगा था, ये ऐसा कर रखा था सामान। ये संदूक जो है, ये ट्रंक जो है, ऐसा कर रखा था। देखो साहब, जो मेरा पैसे का बक्सा था और अलमारी थी और बही खाता था। अगर आप ये नहीं वापस अपने उद्योग पे आते, अपने घर पे यहाँ पर आते हैं, तो आप अपना जीवन कैसे चलाएंगे? हम साहब जन आंदोलन करेंगे साहब और अपने प्राणों की बलि देंगे साहब। यहाँ वैष्णो देवी एक्ट लगाने के चक्कर में गवर्नमेंट है, मैं इसका घोर विरोध करते हैं। अगर वैष्णो देवी एक्ट लगेगा तो उससे आप पे क्या असर पड़ेगा? उस पे हमारी पूरे क्षेत्र की रोजी रोटी छीनी जाएगी। और उसमें यहाँ ऐसा है कि हमारे स्थानीय लोगों का
पंडिताई करते थे, कोई किसी की दुकान थी, किसी के लॉज थे, तो किसी के झोपड़पट्टी, घोड़े खच्चर वाले सब इसी पे जुड़े थे। अगर ये वैष्णो देवी एक्ट लग गया तो सारे लोग भूख से मर जाएंगे। How are you ensuring security now? See, What are the security I'll measures? break a news to you. A lot of people were saying that cash was there, SBI Bank was also, their chest was also missing. We have recovered that chest from the debris. There is no yatri or somebody who has reported to us that so and so things have been looted by. CCTV is installed for temple security so that nobody intrudes, because you know it's open from all the sides now.